Imagine there's a company X who wants to issue 1 crore shares of rupees 10 each at rupees 200. The company wants to issue how many shares? At what price? 200. 10 rupees is the face value, sir. Bacha, 10 rupees is the face value. Now there is a something called as a minimum subscription clause. This clause is added by the Companies Act and it is mandatory as per SEBI as well as Companies Act. This clause says that any company making a public issue should get minimum 90% applications. Any public issue for a company is a sale. और सेल पे लगा हुआ है shares. Company is offering the shares to you at what price? 200. Face value कितना है? 10 rupees. Not an issue, fine. But if 90% applications are not received, that means if 1 crore is 100 lakhs, if 90 lakh shares के लिए applications नहीं आया, then what? Then the company has to cancel the IPO, return back all the money. If there is a delay in returning the money, you have to pay interest as well. Now, any public offer, any IPO is a costly affair for any organization. नाम खराब होगा बात की बात है. मेरा कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर रहा है, कोई बाय नहीं कर रहा है, कंपनी का नाम खराब होगा मार्केट में. That's always a different thing. But before that, a company has to always go for minimum subscription clause. The IPO is a costly affair, and it's a costly affair. It means you spend crores of rupees on advertisement. You spend money on hiring some experts. You will draft the prospectus. You hire some people, legal executives or the solicitors, marketing experts. Huge amount of money is at stake. Along with the name and the frame, the huge amount of money is invested by any organization when they go for an IPO. तो इतना खर्चा करने के बाद अगर 90 लाख एप्लीकेशन नहीं आएगा तो ये पूरा IPO कैंसिल, पैसा रिटर्न नहीं देगा तो इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगा. Now imagine company is doubtful. See, no company can be absolutely confident regarding the number of applications they are going to receive. और भैया अभी तो बॉयकॉट का ट्रेंड आ गया, अभी तो बॉयकॉट का ट्रेंड आ गया. आज की तारीख में कोई कंपनी रिस्क नहीं लेगा. So if tomorrow some XYZ Mr. Khan or Mr. Patel goes for an IPO of his company and there is a media boycott in the media, you never know. No one will subscribe.
पूरा शो फ्लॉप हो जाएगा, पैसा बर्बाद. What these companies do, they hire a specialist. एक ऐसा बंदा जो इस बात का गारंटी देगा कि मार्केट में अगर 90 लाख शेयर्स सेल नहीं हुआ मेरा एग्जांपल में, तो बैलेंस शेयर्स में बाय करेगा. इमेजिन इमेजिन ओनली applications for 82 lakh shares are received. तो और लेते थोड़ा ज्यादा, 88 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया. सर 1 crore is 100 lakh shares, so I should have received 100 lakh का 90%. I should have received 90 lakh applications. नहीं सर, I should have received application for 90 lakh shares. लेकिन सर मुझे एप्लीकेशन कितना आया, 88 लाख. 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन. तो कंपनी में हूं, मैंने कितना शेयर ऑफर किया था, नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है. राइट नाउ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द क्वांटिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अमाउंट. हाउ मेनी शेयर्स वी ऑफर्ड, 1 crore. हाउ मेनी शेयर्स वेर परचेज्ड बाय द कॉमन पीपल, 88 lakhs. हाउ मच इज द शॉर्टफॉल ऑफ द एफिशिएंसी. सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए 2 लाख कम पड़ रहा है. ओवरऑल अनसोल्ड स्टॉक कितना है, अनसोल्ड शेयर्स कितना है. एक ऐसा बंदा जो इस बात का गारंटी देगा कि कोई नहीं लेगा तो मैं लेगा, कोई नहीं लेगा तो मैं लेगा, उस बंदे को कहा जाता है underwriter. Is a person who will vouch, who will guarantee that when no one is buying, I will buy. Legally, owner of the company is the shareholders. Of course, anyone can buy. When I say owner of the company, one person is not the owner of the company. In case of IPO, it becomes a public offer. Company becomes a public company from a private company. So imagine there is a private company where Tanisha, Tanish, me are the shareholders. We converted our company from private to public. We are already existing shareholders of the company. Nowhere in law it says कि भाई existing shareholders इस कंपनी का शेयर्स नहीं ले सकता है. एक बार प्रेशर लिया तो वापस से नहीं मिलेगा, ऐसा किधर लिखा है क्या? Are you getting me? Anyone can buy. The point is, underwriters are the people who will guarantee that जब कोई नहीं लेगा तो हम लेगा. अब रियल लाइफ में उल्टा होता है. रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में कंपनी विल अपॉइंट एन अंडरराइटर. अंडरराइटर गारंटी देगा कोई नहीं लेगा तो मैं लेगा. आई विल बाय, नो वन इज बाइंग इन द मार्केट. ये तो बाहर से बहुत कॉन्फिडेंटली बोल दिया तुमने, लेकिन अंदर से तो अपने को पता है, डर लग रहा है. कोई नहीं लेगा तो अपन को बाय करना ही पड़ेगा. इन लोग क्या करता है, आईपीओ के टाइम पे इन लोग दे सर्च फॉर द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. और इन लोग करते हैं समथिंग कॉल्ड एज पिचिंग. They search for the potential investors and they will convince them to buy the shares. अच्छा, इन लोग सेल्समैन की नहीं कर रहे हैं कि हमारे ये कंपनी का शेयर्स लो, तुम नहीं लेगा तो मेरे को लेना पड़ेगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. अंडरराइटर्स आर प्रोफेशनल्स. माय डियर फ्रेंड्स, अंडरराइटर्स आर प्रोफेशनल्स, दे आर नॉट सेल्समैन. शेयर्स ले लो, आलू लो, गांजा लो. ऐसा नहीं होता बस. Point is, these people will have a, they will conduct seminars, they will conduct one-to-one
face-to-face meeting, there will be presentations. They'll explain the potential. Let us say these are my potential investors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These 8 people are my potential investors. I will visit appointment with them. I will do presentation to them. I will explain them as an underwriter. What is the company? What is the background of the company? Who are the founders of the company? What are their products? What is their potential? What are their future plans? Everything from past till future. Based on which these people will make a decision that is buyout. As an underwriter, I would question them when they will. Underwriters are professionals. They are not common salesmen in a big bazaar. And just pitch to the product को ले लो बेटे. नहीं. They are not underwriters. अरे इनको इसके बदले में क्या मिलेगा सर? आज अगर मैं कंपनी का अंडरराइटर बन जाता हूं, मैं कंपनी को इस बात का गारंटी देता हूं कि कोई नहीं लेगा तो मैं लेगा. बदले में इनको क्या मिलेगा? इनको बदले में मिलेगा समथिंग कॉल्ड एज रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, कॉल्ड एज अंडरराइटिंग कमीशन. क्या बोलेंगे उसको हम लोग? व्हाट इज एन अंडरराइटिंग कमीशन? कमीशन पेड टू द अंडरराइटर्स फॉर guaranteeing that they will buy the undersubscribed shares. Undersubscribed जितना एप्लीकेशन आना चाहिए था उससे कम एप्लीकेशन आया तो undersubscribed. I hope you know what is undersubscribed. नहीं पता तो you are supposed to ask me. Anything less than what is offered for sale is undersubscribed. 90%, let me complete. 90% is the minimum subscription clause. उतना एप्लीकेशन नहीं आएगा तो बैलेंस तो बाय करना ही अंडरराइटर को. But if I go for full underwriting, there is something called as full underwriting, partial underwriting. Right now I am talking about full underwriting. When I say full underwriting, I am giving you a guarantee that all the shares will be purchased. मैं अंडरराइटर है, कंपनी को बोलता है कितना शेयर बेच रहा है मार्केट में, 100 लाख शेयर बेच रहा है, मैं गारंटी 100 का 100 लाख बेच के दिखाएगा. जितना नहीं बिकेगा मैं खरीदेगा. कितना एप्लीकेशन आया? 88 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, बाकी का 12 लाख मैंने बाय कर लिया ऐसे अंडरराइटर. क्या क्वेश्चन प्लीज? I try to cover everything, don't worry. ठीक है? Got my point? And in return, underwriter gets something called as a commission, called as underwriting commission. Be loud. Of course, underwriter किसी को नहीं बेचता है. मैं अंडरराइटर हूं. कंपनी ने 1 अप्रैल को ऑफर ओपन किया आईपीओ का, इनिशियल पब्लिक ऑफर. लेट अस से इट क्लोजेस ऑन 1 सितंबर. कंपनी का शेयर्स में 1 सितंबर तक अंडरराइटर्स क्या करेगा? दे विल पिच द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. वो सिर्फ हेल्प करेगा इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करने का. इन्वेस्टर्स विल टेक द डिसीजन एंड अल्टीमेटली उन शेयर्स पे ना. गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली. अब ये कैसे मालूम पड़ेगा मैंने कितने इन्वेस्टर्स को शेयर्स बिकवाया कंपनी का? तो उनके एप्लीकेशंस पे ना मेरा एक स्टैंप लगेगा. रियल लाइफ फिजिकल जब एप्लीकेशन होता है वैसा होता है. आजकल एप्लीकेशन ऑनलाइन हो गया, तो वहां पे देयर विल बी सम आइडेंटिटी रेफर्ड बाय. उसमें आपको लिखना पड़ेगा इस अंडरराइटर ने रेफर किया मुझे, इसके कहने पे मैंने शेयर्स लिया. Those applications which will go through me as an underwriter will be called as marked applications. क्या बोलेंगे इसको? तो उसपे मेरा मार्क लिखा हुआ है. मार्क्ड क्यों? क्योंकि ना in real life there are multiple, there are joint underwriters. Companies never depend on one single underwriter. There are multiple underwriters, joint underwriters. Okay, let us say there are 3 people, A, B, and C. So there are 3 people, A, B, and C. All 3 are joint underwriters. So they will mark their shares individually.
Okay. So those applications, so in case there are joint underwriters, that is, we have A, B, C, and D. There are 4 people who are trying to pitch the various investors to buy the shares. So एक का अपना अलग एप्लीकेशन पे कुछ ना कुछ मार्किंग होगा, आइडेंटिटी होगा. डी के एप्लीकेशन पे अलग से कुछ नाम लिखा होगा, सी केस में अलग रहेगा, डी केस में अलग रहेगा. All those applications which are marked as A applications will be called as marked applications of A, or marked applications of B or C or D, as the case may be. Companies need to compulsory appoint an underwriter at the time of IPO, because investors' behavior is highly uncertain. No matter how popular the company can be, you never know. People may just distance themselves from a very popular company with a fear of risk element. You never know. Let us see some of the basic things. What is an underwriting? I assume the font is visible. First thing, what is an underwriting? Underwriting is an agreement with or without condition. To subscribe means to apply to the securities of the company. When existing shareholders of the company or the public do not subscribe to the shares or the securities offered to, when nobody is buying the shares of the company, it is the underwriters who will vouch, who will agree with or without conditions. They will give an undertaking कि कोई नहीं लेगा तो हम लेगा. As per the SEBI guidelines, if the company is not able to collect 90% of the offer amount, then it needs to compulsorily return the money to those who have subscribed. And because of this, if this happens, then company will suffer huge losses, because companies have spent huge amount of money on issue of a shares on IPO. So this is avoided by appointing a specialized group of risk redeemables called as underwriters. My next question. कंपनी का 100 लाख का ऑफर था हमारे यहाँ पे. फॉर एग्जांपल में कंपनी ने कितना शेयर ऑफर दिया था, 1 करोड़ के 100 लाख शेयर. नंबर कितना सी बात होगी, अमाउंट की बात वही नहीं होगा सर. 100 लाख में से, सर 100 लाख में से 1 लाख से दिया चीज आ गया. इस बैंक को हमने अंदर लाइट होगा, हमने इसलिए चल रहा है बैलेंस कर रहा है. ये 12 लाख से पूरे बैंक में इसका क्या करूंगा. ये तो नहीं कमीशन कमाने के चक्कर में मेरा पैसा लगा. As a underwriter, if I buy these shares, what am I going to do with these shares? That's the question. Basically, last minute. You already reached the investment, the money is mine. अभी आगे तो अभी क्या फर्स्ट सेकंड में क्लोज हो गया आईपीओ. वही किया तो मेरे को नहीं पता था. जनरल का तो मैंने 12 लाख शेयर दे दिया, अभी क्या करूं. बेच दो.
ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते थोड़ा. Now there is a limit regarding how much commission can be paid for underwriting the shares. भाई और बहनों, Companies Act says that any organization can pay underwriters commission only if it is authorized by the articles of. And what's the maximum you can pay? In case of shares, issue of shares, you can pay. In case of debentures, you can pay 2.5. Type नहीं हुआ. In case of debentures, you can pay maximum how much? In case of shares, maximum. In case of issue of debentures, maximum. Any doubts? Next point. Below, next point पे focus कीजिए. Commission is payable on the भाई और बहनों, कमीशन पूरे अमाउंट पे मिलेगा. कैसे सर? तो कुछ ऐसे. You are selling 1 crore shares. Multiplied by एक शेयर हम कितने में बेच रहे थे? 200 rupees. Face value was 10. Face value was 10. I'm not talking about the face value, बच्चा लोग. He sold 1 crore shares at 200 rupees as a company. तो कंपनी को कितना पैसा मिलेगा? इस 200 करोड़ पे अंडरराइटर को मिलेगा मैक्सिमम, इन केस ऑफ शेयर मैक्सिमम 5% कमीशन. तो 200 करोड़ का 5% आएगा. 1 करोड़ कमीशन मिलेगा किसको? अंडरराइटर को. ये वाह, क्या आ रहा है? 5%. हाँ जी, 10 करोड़ कमीशन. अरे वाह, पैसा ही पैसा. साल भर में एक अंडरराइटिंग करने का, पिक्चर खत्म. 10 करोड़ कमाने का, अगला 5 साल तक कमाने का जरूरत नहीं है. साल भर में एक अंडरराइटिंग भी किया तो सफिशिएंट है. सुमित, 10 करोड़ मिलेगा अंडरराइटर को. पैसा ही पैसा. And next question, who can become an underwriter? Anyone?
heavy fees. I don't know the exact amount right now, but minimum they will charge me about rupees 5 lakh or 10 lakhs per annum as a fees to become an underwriter. They will look at, of course, unpढ़ का मतलब मेरे को नहीं पड़ेगा. Someone who is educated, someone who has a background of legal knowledge or maybe company compliance to become an underwriter, he must be capable of paying a certain amount of fees. I don't recall the exact amount, but 5 से 10 लाख के बीच में फीस है. उसका कुछ एक लाइसेंस मिलता है 1 साल या 2 साल या 5 साल का. don't recall. Let's say more of a company or term here more into account, but then you need to get the license to become an underwriter. That has to be reviewed after a specific time interval. Okay, I think 5 years over कुछ और 5 years over लगता है. Plus, as someone said, most of you said पैसा दी. So they also look at your net worth. They also look at your net worth. And in case of a company, also they look at the overall net capital and so many different things. The point is, you can't be an underwriter just for the sake of becoming an underwriter. There are some guidelines to follow. So my point was, commission will be paid on the whole issue. Imagine a situation, I am an underwriter of this company. Company has offered 1 crore shares. For how much amount? 200 rupees. तो कंपनी को टोटल इशू का कितना पैसा मिलेगा सर? 1 करोड़ शेयर मल्टीप्लाइड बाय 200 करोड़ मिलेगा. Imagine that is all the shares are subscribed. All the shares are company was offering how many shares? And 1 crore shares. 1 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया. 1 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गया. तो एज ए अंडरराइटर मुझे कोई शेयर्स बाय करना पड़ेगा. मेरा सवाल है, कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कमीशन मिलेगा? चीजें नहीं मिलेगा. आप क्या बोलते? मिलेगा? चीजें मिलेगा. He says 5% नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा. अरे मैं अंडरराइटर है, मैंने अंडरराइटिंग एग्रीमेंट साइन किया है. कोई नहीं लेता था, मुझे लेना पड़ता था. अब इसमें मेरा गलती है क्या? सब लोगों ने ले लिया शेयर. तो व्हाई विल आई गिव अप माय कमीशन? मैं तो पूरा पैसा लेगा. हाँ पूरा लेगा ना मैं. आई एम अंडरराइटर, आई एम ए गारंटर. अगर नहीं तो मेरा गलती है, मुझे नहीं, मैं तो रेडी हूँ खरीदने के लिए. See what the underwriting agreement will say. Underwriting agreement क्या बोलेगा बच्चा लोग? Underwriting agreement very clear. In the event shares are not subscribed, underwriting will buy the shares at rupees 200%. अगर मार्केट में शेयर नहीं सेल हुआ 1 करोड़, जितना भी शॉर्टफॉल है उसको हम वर्ड करेंगे शॉर्टफॉल. जितना एप्लीकेशन कम आया तब कौन बाय करेगा? अब अगर एप्लीकेशन ज्यादा आता है या एग्जैक्टली 1 करोड़ आता है, इसमें अंडरराइटर क्या फर्क है? तो बोलिएगा मैं गारंटर हूं. क्या investors will also vouch for the shares which are guaranteed by some underwriters. अंडरराइटर हवा में दूसरी कंपनी का शेयर को गारंटी दे. अंडरराइटर की कुछ ना कुछ पोटेंशियल बैकग्राउंड चेक करता है. जो कंपनी आईटी इशू कर रहा है उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उस कंपनी का प्रोफाइल चेक करेगा, उसका प्रोडक्ट क्या है. सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. there are multiple criteria that are looked upon by an underwriter before accepting the underwriting agreement. They are professionals, highly qualified experts with a high net worth. They
Therefore, even if the issue is fully subscribed, they are eligible to get full commission. You can't say कि भाई तुमने शेयर नहीं लिया तो तुमको कमीशन नहीं देंगे. अरे भैया हमने गारंटी दिया तब जाके तुमने इशू लाया. They are allowed, they are supposed to get the full commission. You can't deny the commission at all. Is that clear? All of you? पक्का बोलना.